Morning, children. Good morning, ma'am. Today, Morning, ma'am. good morning. Morning, ma'am. Good morning, children. Today, you will revise chapter 1. Two topics were left for discussion. I will discuss these two topics, and after that, I will take your oral test. Okay? And when you will get the chance to give the answer, only one student will give the answer. Sometimes all of you start asking, may I? That should not happen. One by one you will give the answer, okay? So, topic was, Okay, ma'am. Okay, ma'am. you have read that there are two modes of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition takes place in green plants, where the green plants synthesize their own food by photosynthesis. Photo means light and synthesis means to put together. The green plants prepare their own food, and the raw material for photosynthesis are carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Okay? And the food is prepared in the leaf. Yes, ma'am. So leaf is called kitchen of the plant. Okay, children? Or it is also called food factory of the plant. How do they get carbon dioxide? They get it through atmosphere. Atmosphere. In The the of air. in the leaf, small pores are present called stomata, and through stomata, carbon dioxide enter the leaf, and the plants get water and mineral from the soil. The roots absorb water and mineral with the help of root hair, and then water and mineral is transported from the root to the leaf through vessel. These vessels are tube-like structures. It is conducting tissue. It is called xylem. Okay, and then sunlight is taken from the sun, and in the leaf chlorophyll is present, and the plants prepare their own food. Photosynthesis reaction also I had discussed, equation that is very important. 6CO2 plus 6H2O. Then in the presence of sunlight and chlorophyll you will put arrow, and the product formed is 6H12O6 plus 6O2. This C6H12O6 is glucose, and glucose is a carbohydrate. So glucose is produced, Glucose. and this glucose is converted into starch. Okay? Some starch is also converted into proteins and fats. And oxygen is also What is the produced. formula of glucose? C6H12O6. H12O6. Equation is given in the book. Very important. So all of you will learn. Yes, ma'am. Then you had read heterotrophic nutrition. In heterotrophic nutrition you have seen there are different types of heterotrophic nutrition. Hetero means others. Some plants depend on others to get their food. They are called heterotrophs, and the mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Again, heterotrophic nutrition is of three types. First is parasitic nutrition, next is saprotrophic nutrition, and last one is holozoic nutrition. Okay? In parasitic nutrition you have seen what happens. The plants get food from other plants. The other plant from which they get food is called host. Okay, like cuscuta, that is also known as amarbel or dodder. It is a parasite. It gets its food from bushes, from other plant. Okay, you see that yellow thread-like structure is cuscuta, which is on the bushes, and it gets its food from that bushes. Bush is also plant. So that plant from which it is getting food is called host, and cuscuta is a parasite. Next you have studied, children, that is insectivorous plant, pitcher plant. Why it is called pitcher plant? Because the leaf is modified into a pitcher-like structure. A pitcher with lid is formed. The leaf is changed
into a pitcher with lid, and when the insect sits on this pitcher, the lid covers, and in the pitcher there are hair-like structures. These hair-like structures do not allow the insects to go away from the pitcher, and the insect is trapped inside the pitcher. Digestive juices is produced in the pitcher and the food is digested. So the pitcher plant gets its nitrogen requirement from the insect. Pitcher plant is insectivorous plant. Pitcher plant is insectivorous plant. It fulfills its nitrogen requirement by taking insect. Okay, नाइट्रोजन इसको कहाँ से मिलता है? ये इंसेक्ट को खाता है. जैसे ही इंसेक्ट पिचर पे बैठता है वो लीड ढक्कन बंद हो जाता है और उसके अंदर पिचर के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से फिर इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाता है. और उसी पिचर में डाइजेस्टिव जूस. हाँ बोलिए बोलिए. मैम ये जो पिचर प्लांट है वो इंसेक्ट को ही सिर्फ खाते हैं या मैम वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इसीलिए वो क्या है, हेटेरोट्रॉफ हैं. अभी मैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बता रही हूँ. फोटोसिंथेसिस सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स में होता है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस होता है और हेटेरोट्रॉफ्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. वो अपना फूड ऑटोट्रॉफ से लेते हैं, ग्रीन प्लांट से लेते हैं. जिससे लेते हैं उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है. और जो ले रहे हैं वो हेटेरोट्रॉफ हैं. जैसे अभी मैं बताई डॉडर, जिसको कस्क्यूटा या अमरबेल भी बोलते हैं, येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये बुशेस के ऊपर रहता है और उसी बुशेस से अपना फूड लेता है, ठीक है. तो ये क्या है, पैरासाइट है. पैरासाइट कहते हैं जब दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और दूसरे को हार्म होता है. तो यहाँ पर डॉडर है बुश के ऊपर, डॉडर को फ़ायदा हो रहा है और बुश को हार्म हो रहा है. तो इसीलिए ये कैसा न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. और कस्क्यूटा क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है, ठीक है. अब समझ में आया? यस मैम. तो ये हाँ, तो अमरबेल जिसको कस्क्यूटा या डॉडर बोलते हैं वो पैरासाइट है. वो जिस दूसरे प्लांट से भोजन लेता है उस दूसरे प्लांट को होस्ट कहते हैं, ठीक है. दूसरा आप पढ़ रहे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसको कहते हैं पीचर प्लांट. पीचर मीन्स घड़ा होता है, ठीक है ना. तो अभी मैं बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, म्यूट कर रही हूँ. तो पीचर प्लांट में लीफ ही चेंज हो गया है. मॉडिफाई होना मतलब चेंज होना. लीफ कैसा बन गया है, पीचर के जैसा. पिक्चर देखिए फूड में, बुक में पिक्चर देखिए, पीचर जैसा स्ट्रक्चर हो गया है और उसके ऊपर एक ढक्कन भी है. लीड मतलब ढक्कन. और जैसे ही इंसेक्ट पीचर पे आता है वो लीड बंद हो जाता है और उस पीचर के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इंसेक्ट को फिर वापस उससे नहीं बाहर जाने देता है और उसी के अंदर इंसेक्ट ट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है ना. समझ रहे हैं? और फिर यहाँ पर लीफ में डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है और उस डाइजेस्टिव जूस के हेल्प से वो प्लांट जो है पीचर प्लांट इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है. तो उसको क्या मिलता है, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने से नाइट्रोजन मिलता है. अब कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों वो है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सैप्रो मीन्स रॉटन, रॉटन मीन्स सड़ा गला, ठीक है ना. एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन. सम प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. Such plants are called saprotrophs and the mode of nutrition is called saprotrophic nutrition. Like yeast, bread mold, okay, mucor, that is known as pin mold, agaricus
biological name. It is also called mushroom. Mushroom's biological name is agaricus. Okay, so yeast, rhizopus, which is known as bread mould, mucor, that is known as pin mould, agaricus, that is known as what I said, mushroom. All these are saprotrophs. They grow on dead and decaying matter, and they produce digestive juices outside the cell or outside the body. With the help of digestive juice, they digest the food, they absorb the food. So the digestion is taking place outside the cell or outside the body. It is called extracellular digestion. Am I clear, children? These non-green plants, okay, again I am explaining. Saprotrophic nutrition takes place in non-green plants called fungus and some bacteria also. I told you rhizopus, which is a fungus. Fungus is non-green plant and fungi are plural of fungus. Examples of fungus: bread mould, also called rhizopus; mucor, that is called pin mould; agaricus, that is called mushroom. These plants get their food from dead and decaying matter. The digestive juice is produced outside the cell or outside the body, and the food is digested outside the body or outside the cell. So it is called extracellular digestion. After digestion, the digested food is absorbed by the plant. So this mode of nutrition is called saprotrophic nutrition. Did you understand, children? Write yes or no on the screen. Okay. Okay, Arpita Ranjan has understood. She has written yes, ma'am. From Palak Chita also yes. Anjali also yes. All of you have understood. Amisha also yes. All of you are writing yes. Okay, so saprotrophic nutrition. Aditya Shankar. Aditya, have you understood? Aditya Shankar. Okay, Apurva is writing. It's very easy, very good. When you understand anything, it becomes very easy. Otherwise, it remains very difficult. So it's clear that all of you have understood. Ma'am, so easy. Okay. So you have seen saprotrophic nutrition. Next type of heterotrophic nutrition is can you say what is next type of heterotrophic nutrition? That is holozoic nutrition, that you will read in nutrition in animals. Am I clear? Nutrition in animals, when you will read, then you will read that the holozoic nutrition takes place in man and amoeba. Okay, so right now you came to know about saprotrophic nutrition, parasitic nutrition, autotrophic nutrition. Now the next topic is symbiotic relationships. Symbiotic relationship is a relationship in which two organisms live together and both are benefited by each other. No one is harmed. Okay, when two organisms live together and both are benefited by each other, no one is harmed. That is called symbiotic relationship. Like you have read, lichen is a symbiotic relationship in which algae and fungus live together. Algae prepares food for fungus and fungus provides minerals and other things for making the food. Fungus absorbs water and minerals and give it to algae. Algae requires water and mineral for photosynthesis. So fungus is helping algae by giving water and mineral. And algae also helps fungus by providing food. So both are benefited by each other. It is symbiotic relationship. Did you understand? When two organisms live together and
each one is beneficial for the other, or you can say both are benefited by each other. That is called symbiotic relationship. Like lichen is a symbiotic relationship in which two organisms are living together, alga and fungus. Alga is singular. Alga prepares food for fungus and fungus provides water and mineral. Fungus absorbs water and mineral from the soil and give it to alga, and alga requires water and mineral for photosynthesis. So both are benefited by each other. So it is an association called symbiotic relationship. ये समझ में आया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे आप दो फ्रेंड एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं ना, आप फ्रेंड को कुछ बताते हैं, किसी मैथ्स में प्रॉब्लम है तो, और अगर आपकी फ्रेंड साइंस में अच्छी है तो वो आपको साइंस में हेल्प करती है, तो आप दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो कौन सा रिलेशनशिप आप दोनों में है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर आप दोनों का स्पेसीज सेम है और वहाँ पर स्पेसीज अलग अलग है। तो एल्गा अलग है, फंजाई अलग है। एल्गा नॉन ग्रीन प्लांट है, सॉरी एल्गा ग्रीन प्लांट है और फंगस नॉन ग्रीन प्लांट है, लेकिन दोनों साथ रहता है। और फंगस जो है वो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है और एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड किसको देता है? फंगस को। तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है, इसलिए ये कौन सा रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसी तरह से एक और आप देखिएगा, वो रिलेशनशिप कहाँ है? राइजोबियम बैक्टीरिया में। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट किसको कहते हैं? जिस प्लांट में पॉड्स होते हैं, जैसे आप मटर देखते हैं, बीन्स देखते हैं, सोयाबीन देखते हैं, पीस देखते हैं, मटर देखते हैं, इस सब में पॉड के अंदर रहता है सीड। देखे हैं ना, मटर किस छिलका छुड़ाते हैं तब उसके अंदर सीड होता है, उसको पॉड कहते हैं। जिसमें पॉड के अंदर है उसको क्या कहेंगे? लेग्यूमिनस प्लांट। जैसे पल्सेस जैसे पीज जिसको मटर कहते हैं, ग्राम, चना, बीन्स, सोयाबीन, ये सब क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट है। तो इनके रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं। रूट नोड्यूल मतलब गांठ जैसा स्ट्रक्चर, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं यूज कर सकता है। एयर में तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो अनयूजेबल है प्लांट के लिए, प्लांट नहीं यूज कर सकता है। तो ये प्लांट जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको नाइट्रेट में चेंज कर देता है और ये सॉइल में आ जाता है। फिर सॉइल से प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है। ये नाइट्रेट को वो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है और प्लांट राइजोबियम को क्या दे रहा है? शेल्टर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। डिड यू अंडरस्टैंड? देयर इज symbiotic rhizobium is bacteria which lives in root nodules of leguminous plant, and plants cannot use atmospheric nitrogen. This rhizobium converts atmospheric nitrogen into nitrate, and now this nitrate is in the soil. Now the plants can use this nitrate and can get nitrogen. So rhizobium is giving nitrogen to plant and plant is giving shelter to rhizobium. So there is a symbiotic relationship between rhizobium and leguminous plant. Did you understand? Yes, again you are writing so easy. Very good children. Now next topic is how are nutrients replenished in the soil. अब ये न्यूट्रिएंट जो, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स खाते हैं ना, वैसे ही प्लांट को भी न्यूट्रिएंट मिलता है सॉइल से। और जब प्लांट हमेशा ग्रो करता है तो सॉइल में जो वो न्यूट्रिएंट यूज कर लेते हैं तो सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। अब ये न्यूट्रिएंट कैसे सॉइल में फिर से जाता है? तो फार्मर्स जो है वो सॉइल में फर्टिलाइज़र्स यूज करते हैं, जिसको आप खाद कहते हैं।
मैन्योर्स यूज करते हैं। मैन्योर्स किसको कहते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वही मैन्योर बनाते हैं। तो मैन्योर भी फार्मर यूज करते हैं, ऐड करते हैं सॉइल में। और अभी आपने पढ़ा राइजोबियम बैक्टीरिया, वो भी नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करता है, ठीक है ना। और बहुत सारे प्लांट्स जब डाई हो जाते हैं तो वो डिकम्पोज होते हैं और उससे भी वो न्यूट्रिएंट सॉइल में चला जाता है। तो देयर आर 4 मेथड्स बाय विच सॉइल इज replenished. What are the methods of replenishment of soil? How are nutrients replenished in the soil? Nutrients are replenished in the soil by the farmers. The farmers add what? Fertilizers and manures in the soil. But in the forest, farmers do not go to add nutrient. Farmers do not go to add manures. Then in the forest, how the soil is replenished? There rhizobium bacteria is there in the root nodules of some plants, leguminous plant, which convert atmospheric nitrogen into nitrate, and the plants get nitrogen from the soil. The soil is replenished in nutrient, and when the plants and animals die, they decompose, then also nutrients are added to the soil by bacteria and fungi. They are the decomposers and they add nutrients in the soil. In this way, nutrient is added to the soil. Am I clear, children? All the topics are clear. Now I will unmute you and I will raise the question. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Anyone has any problem? Has anyone any doubt in anywhere in the chapter? Yes, ma'am. Me, Apurva. Yes, बोलिए. Ma'am, yes, ma'am. अगर plant carbon dioxide Your voice is not clear. You write on the screen, Apurva. Apurva, write on the screen. Your voice is not clear. Write on the screen. Apurva, your voice is not coming. now it is बोलो. now it is clear. Yes. Your voice is not clear. Write on the screen. Screen. Yes, ma'am. I am writing. Okay. Yes, ma'am. I am clear. Excuse me, ma'am. Yes, plants cannot use nitrogen. Cannot absorb nitrogen. It can absorb carbon dioxide, but it cannot absorb nitrogen because it is getting nitrogen from the soil. Okay? In the soil, nitrogen is available. Am I clear? So it gets nitrogen from the soil. And carbon dioxide is present in the atmosphere, and through the stomata, the plants get carbon dioxide from the atmosphere. Anybody else who wants to ask any question? Ma'am, what is the function of nitrogen in plant? Nitrogen helps in growth of the plant. Nitrogen is a constituent of protein also. Okay? So it helps to make protein, and all of you know protein helps in growth. Ma'am, growth. Yes. Ma'am, can you repeat the symbiotic relationship between Yes, symbiotic relationship is a relationship where two organisms live together. It is an association of two organisms of different species. They live together and both are beneficial for each other. Okay? Like lichen is a symbiotic relationship which is an association of alga and fungus. Fungus provides water and mineral
to the alga. Fungus absorbs water and mineral from the soil and gives it to alga, and alga in return gives food to fungus, because alga can prepare food by photosynthesis and fungus cannot prepare food. Okay, so you have seen both are beneficial for each other. One more example. Rhizobium is a bacteria that lives in the root nodules of leguminous plant. The leguminous plant gives shelter to rhizobium and the rhizobium is giving nitrogen to leguminous plant. So these are the two examples of symbiotic relationship. Any other question? Yes. One student is writing, I did not understand how nutrients are replenished in the soil. Nutrients means carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, all these are the nutrients. Plants also require nutrients to carry out different life processes, and they get nutrients from the soil. And in the soil, the farmers add manures and fertilizers to replenish nutrient. Okay? What do farmers add? Fertilizers and manures. Fertilizer means khad and manure is organic matter. Okay? And rhizobium also adds nitrogen in the soil. I have discussed in symbiotic relationship. And when the plants and animals die, then also the bacteria and fungus convert nutrients they add nutrients in the soil. In this way, nutrient is added in the soil by 4 methods: by adding manures, by adding fertilizers, by the decomposition of dead plants and animals, and by rhizobium bacteria. Any other problem? Now अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका नाम बोलूंगी सिर्फ वही बच्चा जवाब देगा. मैम कैन आई, नोबडी विल से. ओके? आदित्य शंकर, टर्न ऑन योर वीडियो. आदित्य शंकर. आदित्य शंकर. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पूछ रहा है शुभम कुमार. मैंने बताया ना, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है. मतलब जो प्लांट होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं रॉटन मटेरियल पे. ठीक है ना? जैसे सड़े हुए लकड़ी के ऊपर आप देखते हैं मशरूम ग्रो करता है. तो ये मशरूम में कैसा डाइजेशन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. ये मशरूम कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है फूड के ऊपर, और वो फूड जो है वो सेल के बाहर, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है, और फिर उस डाइजेस्टेड फूड को वो प्लांट जो है जिसको आप मशरूम कहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है. यही है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. आदित्य शंकर, टर्न ऑन योर वीडियो ऑन करो. आदित्य शंकर, बाकी बच्चे का वीडियो ऑन है. आदित्य शंकर, टर्न ऑन योर वीडियो. आदित्य शंकर, टर्न ऑन योर वीडियो. योर वीडियो इज ऑन. आदित्य शंकर. हाँ, चलिए बोलिए. आदित्य शंकर, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? गिव द आंसर. नो आंसर. नेक्स्ट. Which organism fixes nitrogen in the soil? I will raise 5 questions. आदित्य. हाँ बोलिए. What is autotrophic nutrition? Mode of nutrition in which organisms prepare their own food. Correct. Very good answer. Now, which plant is insectivorous plant? Give one example. Pitcher plant. Very good. Next question. Mushroom is an example of what? Mushroom is an example of what? Parasite, autotroph,
saprotroph, none of the above. What is correct answer? Mushroom. Aditya Shankar. Now next question is, what is symbiotic relationship? Heterotrophic. What is symbiotic relationship? Now Shubham Kumar, what is symbiotic relationship? Sometimes two organisms live in close association and develop a relationship that is beneficial to both. Aditya Shankar. Symbiotic. Aditya Shankar, correct answer. Very good answer. Now Shubham Kumar, you have to give the answer. Next question I am asking. Why do some plants feed on insects? Why do some plants feed on insects? Ma'am, because they do not get nutrition. Why do some plants feed on insects? Ma'am, because they do not get sufficient nutrition. No, it is not correct answer. Apurva, why do some Yes, plants ma'am. feed on insects? Ma'am, some plants feed on insects because the lack of nitrogen. Yes, they get nitrogen. For nitrogen requirement, they feed on insects. Very good, Apurva, correct answer. Now, next question is, why would life be impossible on earth? Amisha Kumari, you have to give the answer. Why would life be impossible on earth in the absence of photosynthesis? Amisha? मैम ये मेरा क्वेश्चन है क्या? No. Amisha couldn't answer. Now, Rishabh Srivastav, give the I answer. can answer. You can answer? Okay, say. Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, photosynthesis is a unique process. It is a process that supplies food directly or indirectly for all living organisms. Very good, Amisha. Very good. Energy of the sun. Yes, you have understood. All organisms. Photosynth- from plants also provide oxygen of respiration. Yes, correct answer. I understood, you have followed. Photosynthesis, why life would be impossible in the absence of photosynthesis? Photosynthesis is a unique process that provides food directly or indirectly to all living organisms. Okay, herbivores depend on plants to get food. Carnivores depend on herbivores to get food.